So what is vector? Vector means the quantity which has magnitude as well as direction. That quantity is known as vector. You can say, let's say, force. Is it vector? Yes, sir. It is a vector Yeah. quantity. Physical quantity which has magnitude and direction both is known as vector. Now let's discuss about types of vector. So first, zero vector, or you can say null vector. So what is zero vector? The vector which has magnitude is equal to 0. That vector is known as zero vector. Sir, magnitude means what? Magnitude 0 किसका होगा? If you take origin, then this origin is known as zero vector, or you can say null vector. बाकी पॉसिबल ही नहीं है. मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है? कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर. एडिशन ऑफ स्क्वायर्स जीरो तभी आएगा जब तीनों जीरो. So zero vector means what? You can say origin. Second variety, so unit vector. Now what is unit vector? When magnitude is equal to 1, that vector is known as unit vector. Let's say example 1 0 0. Yes, if you see the magnitude is 1. Sir, another example, you can take anything, 1 upon root 3, 1 upon root 3, 1 upon root 3. If you find the magnitude, this vector is also unit vector. Number 3, co-initial vector. Co-initial vector means if starting point is same for the both vector, let's say x and y, then x and y is known as co-initial. If initial point are the same, then that vectors is known as co-initial vectors. Fourth variety, let's say collinear vector. If direction of vectors are same or exactly opposite, then this two vector is known as collinear vector. If direction of two vector is same or exactly opposite, then that vector is known as collinear vector. Next, equal vector. By example, let me explain. If like 2i plus 3j, then it is always, let's say I am having vector this and this, vector 1, vector 2. These two are equal if and only if x is 2 and y is 3. It means when magnitude, component, direction are equal, then and only then that vector is known as equal vector. Sixth variety, negative vector. So if magnitude are same and only direction is opposite, then it is known as negative vector. Let's say example 2, 3 and minus 2, minus 3. If you draw the graph, this is 2, 3 and minus 2, minus 3. So these two vector, first one and second one, is known as the negative vector of each other. Let's take next variety, 7 number, free vector. So what is free vector? If initial point is not defined, then that vector is known as free vector. Sir, समझ में नहीं आया? Suppose someone write x bar is equal to 2, 3. So yes, this vector is free vector because this can be made using any initial point, any final point. Let's take one example, 2, 2. So for the initial point, you can take 5, 5,
and final point you can sorry, my mistake, final minus initial. So you can take final as 5 5, initial as 3 3. The resultant will be 2 2. One more, let's take one more example, 7 7 5 5. Final is 7 7, initial is 5 5. It means when initial is not defined, then that vector is known as free vector. You can draw from origin also 0 0 2 2, where you take initial as a origin. So when initial point is not defined, that vector is known as free vector. Let's take next example, reciprocal vector. Reciprocal vector. So those vector having same direction, but magnitude having same direction, but magnitude is reciprocal to each other. Means let's say magnitude of x bar is 1 upon magnitude of y bar. Then x and y is known as reciprocal vector of each other. Both having must be same direction. Only magnitude we are discussing about only magnitude. If magnitude is 1 upon, then both vector is known as reciprocal of each other. Let's take next, like and unlike vector. So what is like vector? Those vector having same direction is known as like vector, and those vector having different means opposite, only opposite direction, that vector is known as unlike vector. And last one, position vector. Position vector. So if initial point is origin, then it is known as position vector. Means if you draw 2 comma 2 by taking origin as a initial point, that 2 comma 2 you can say this is position vector. You can say free vector also. If 2 comma 2 is drawn by the help of origin, this 2 comma 2 is known as position vector. Now let's discuss about magnitude of vector. So magnitude, how to find magnitude? Very easy concept. Let's say one vector r bar is equal to x comma y comma z. So magnitude is what? Magnitude of r bar you can find by doing root x component square plus y component square plus z's component square. You can write like this, xi plus yj caret plus zk caret also. So how to find magnitude? By taking square root of individual component square, addition of individual components square. Simple. Now next is unit vector. How to find unit vector and what is the meaning of unit vector? So let us assume we are having vector r bar is equal to x comma y comma z. So unit vector is what? R bar upon its magnitude. R bar upon its magnitude. Sir, समझ में नहीं आया? Let's discuss. Some vector having length, let's take r bar. Magnitude means what? It gives the length of vector. By taking origin as an initial, let's draw vector x comma y comma z. X comma y comma z. Now this vector is having length is equal to magnitude r bar. What I need? I need unit vector. And from the definition, I know that unit vector means what? Magnitude must be 1. So let's divide this vector in small segment. Sir, vector having starting and ending point 1 1 1. Let's discuss. Deepak, let's discuss. चलो समझते हैं हमें क्या करना है. ये वेक्टर को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करने हैं और वो सेगमेंट क्या होना चाहिए? वो सेगमेंट का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. वो सेगमेंट का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. तो वो सेगमेंट हमारा क्या कहलाया जाएगा? यूनिट वेक्टर. सो इट मींस अगर सपोज कोई ऐसा बोले कि आर बार इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, मुझे आर बार इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करके दिखाओ,
किस पे? इस वेक्टर के ऊपर। तो ये वेक्टर रहा, उसके ऊपर मुझे क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर। ओके, तो कुछ नहीं करना है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स लेंथ। सपोज आई एम हैविंग द लेंथ 5, आई एम हैविंग द लेंथ 5। तो वेक्टर को आप छोटे छोटे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मतलब डिवाइड बाय 5 करोगे, एक छोटा सा नया वेक्टर जनरेट हो जाएगा, छोटा सा नया वेक्टर जनरेट हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। लेट्स टेक एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड। सपोज आई एम हैविंग r bar is equal to 2, or you can say 1, 1, 1। Suppose I am having r bar is equal to 1 1। So 3D विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो लेट्स कन्वर्ट इट इन 2D। So now I am having 1 1, so you can draw here 1 1। इस वेक्टर को छोटे छोटे वेक्टर में डिवाइड करते हैं। चलो ये रहा। हाँ, तो ऐसे कितने वेक्टर बना सकते हैं? तो सर उसके लिए आपको लेंथ पता होनी चाहिए। तो r bar लेट्स फाइंड magnitude of r bar, so it is √2। And if you divide that vector by √2, 1 by √2, 1 by √2, 1 by √2, 1 by √2 created। ये हो गया हमारा छोटा वेक्टर r1। क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्या? देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r1 इज व्हाट? अंडर रूट 1 by √2 स्क्वायर प्लस 1 by √2 स्क्वायर। सो इट इज हाफ प्लस हाफ √1 1। हाँ, यस, मतलब r1 क्या हो गया? r1 यूनिट वेक्टर हो गया। किस में से बना है? ओरिजिनल वेक्टर r बार में से बना है। मींस अगर कोई बंदा ऐसा बोले मुझे यूनिट वेक्टर ला के दो, 1, 1 का यूज करके यूनिट वेक्टर बना के दो, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल वो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिख दो, तो यूनिट वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। मींस यूनिट वेक्टर इज व्हाट? यूनिट वेक्टर इज r bar upon its magnitude, simple। With question number 1, they said represent graphically a displacement of 40 kilometer। displacement किधु छे बेटा? 40 kilometer 30 degree east of north। let's start, try करते हैं। displacement must be 40 kilometer and 30 degree east of north। पहले तो पता ही नहीं है वेस्ट कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, साउथ कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जैसे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाना है। नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाना है। 30 डिग्री ईस्ट में एंगल बनाना है नॉर्थ से। सो नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल ईस्ट की ओर बनाना है। ओके, बना दिया। ये रहा 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, बना दिया, मस्त। एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 40 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, ये मस्ट बी 40 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या था सर? पता नहीं, वापस एक बार विजुलाइज करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा था कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ओके, ग्राफिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया, एकदम मस्त कर दिया। बट अगर उसको हमें लिखना हो वेक्टर के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट तो कर दिया कि नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल ईस्ट की ओर बनाना है और वो वेक्टर की लेंथ, वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट 40 होना चाहिए। बट अगर मुझे उसको वेक्टर को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं? वो भी एक क्वेश्चन हो गया। सो सिखाते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, where r is what? Displacement 40, and theta is what? Theta is what? Angle with x-axis. Theta is angle with x-axis cos 60. Theta is angle with x-axis. So here 30, here must be 60, and we take as a x-axis this line. Horizontal line take x-axis. 40 sin 60. So we are having 40 cos 60 1 by 2, 20. Here 40 √3 by 2. So 20 √3. This is your vector. This is additional work. In the question they said only represent graphically. So here is our answer.
Okay, this is extra work. If you want to create that vector using initial as a origin, तो आपका वेक्टर हो जाएगा 20,20 √3। कैसे क्रिएट किया? तो ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, r cos थीटा r sin थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Classify the following as scalar or vector. You have to identify the given data is scalar or vector. So let's start. First one, 10 kg, 10 kg. Physical quantity having only magnitude, no direction is there. So this quantity is known as scalar. Now second, 2 meter northwest, northwest की और भाग रहा है, और 2 मीटर मतलब मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. So this is your vector quantity. Last, 40 degree angle. Okay, 40 degree. In which direction? First quadrant, second quadrant, fourth quadrant, third quadrant. So it is not mentioned. Only the value is given. 40 degree, only value is given. Direction is not given. In which direction we create 40 degree. Okay, so this is your scalar quantity. In second question, if 2 meter is given, only 2 meter, then it is स्केलर क्वांटिटी. यूट्यूब पे वीडियो रखा है स्केलर वर्सेस वेक्टर, तो उसमें ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है कि 2, इफ नंबर 2 इज गिवन देन इट इज स्केलर और वेक्टर. व्हाई? एक बार देख लेना वापस, ठीक है. So if only 2 meter is given, then it is scalar, but having the direction means it is vector. Okay, 40 watt. Obviously only magnitude given, so it is scalar vector. Now 10 raised to minus 19 coulomb, once again charge, so it is scalar quantity, only magnitude is given. 20 meter per second square, what is this? Acceleration or velocity? Acceleration. Okay, so it is vector or scalar? Acceleration is always vector quantity, because in that displacement is considered. For the acceleration, displacement is considered, and displacement is a vector quantity. So this is vector only. Like if someone says force is a scalar or vector, force is a scalar or vector. So it's a 10 Newton, only value is given, there is no direction, so scalar quantity. No, it has one vector quantity, m into a. No doubt resultant is 10 Newton, 10 Newton, but there must be direction, or else force has no meaning. So force is also vector quantity. This is vector quantity. ग्राफिकली विजुअलाइज कराऊं तो चलो, ये एक लोकेशन है, घूम फिर के यहाँ पे आ रहे हो, तो यहाँ पे जो चेंज फाइंड कर रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया ना. सो इट हैज डायरेक्शन. एक्सीलरेशन ની વાત કરીએ છીએ. सो घूम फिर के यहाँ पे आ रहे हो, और जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो क्या कर रहे हो? डायरेक्शन को इंक्लूड कर रहे हो. थर्ड नंबर, टाइम पीरियड इज स्केलर और वेक्टर? स्केलर. डिस्टेंस स्केलर, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वर्क डन scalar. Let's see fourth number. So in fourth number they said identify co-initial vector. So from the diagram you can say yes, a bar and d bar are co-initial. If you see, initial point of a bar and d bar are same, so a bar d bar is co-initial. Equal vector, so a bar and a bar yes, yeah, d bar and b bar are the same vector, because direction and magnitude both are equal. So this known as b bar and d bar is known as equal vector. Collinear but not equal. So a bar and c bar are collinear. See here. See here. Collinear but not equal. Okay? अगर इसको मर्ज किया जाए, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. इट इज अ फ्री वेक्टर, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. देखो एक लाइन ही बनेगी. इसको उठा के देखो, पैरेलल जैसा फील होगा. उठा के देखो, एक ही डायरेक्शन में, एक ही 1D में जब भी कन्वर्ट करने जाओगे तो एक ऐसा दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा. मतलब दोनों इक्वल नहीं है, बट